Our today's class is for 11th class. As you know, our subject is geology. We are discussing the types of aquifers. We have already discussed what are aquifers. The underground layer of water bearing permeable rock formations or rock fractures or unconsolidated material that stores groundwater and transmits sufficient amount of it to the pumping well are called aquifers. So, we have already discussed the aquifers. Now, in today's class, we will try to understand types of aquifers. There are two types of aquifers: unconfined aquifers and confined aquifers. What are unconfined aquifers? The aquifers in which groundwater occurs under atmospheric pressure are called unconfined aquifers. So, if a well is drilled in an unconfined aquifer, the water level it represents the water table. So the limit is here is not the restriction of movement of water, or we can say the rocks which are surrounded by the unconfined aquifer do not limit the movement of water from the surrounding rocks. Basically, the surrounding rocks in an unconfined aquifer are permeable rocks. When we try to understand confined aquifer so that we can get the differentiate between unconfined and confined. Confined aquifers are those in which aquicludes lie both above and below it. I have already told you what are aquicludes. Aquicludes are those layers which do not allow the water to pass, or in other words, they prevent water movement. We can also say that aquicludes contain the rocks which are non-porous and non-permeable. So, those beds which do not allow the water or which prevent the movement of water are called aquicludes, and confined aquifers are surrounded by, or in other words, they have the layers of aquicludes above and below. They are the aquicludes are above and below the confined aquifers. So these confined aquifers are confined by aquicludes. The aquicludes restrict the movement of groundwater. As I have already told you, these aquicludes restrict the movement of groundwater either from below the aquifer or from above the aquifer. As a result, in the confined aquifer, the groundwater moves under pressure. The water pressure in such an aquifer, in confined type of aquifer, depends on the difference in height between it and the recharge area. So what is the height of an aquifer and what is the supply from the recharge area to this aquifer? It depends upon the difference of the height of the aquifer as well as the height of the recharge area. So confined aquifer depends upon the heights. If the recharge area is on more height than the aquifer, this the confined type of aquifer, then the water pressure is high. If the recharge area is below the height of this aquifer, then there is less pressure in water. But in this type of aquifer, in the unconfined type of aquifers, there is an atmospheric pressure in the water due to the recharge area which is not bound or which do not restrict the water movement. It
provides the water, because this unconfined aquifer is surrounded by the permeable and porous rocks. If we try to understand in a simple way, ये जो अनकन्फाइंड एक्विफर और कन्फाइंड में हम जब डिफरेंस करेंगे तब हमें आसानी से ये चीज समझ आएगी। अनकन्फाइंड टाइप ऑफ एक्विफर जो होता है इसमें कोई बाइंडिंग नहीं होती है। अनकन्फाइंड टाइप ऑफ एक्विफर में ये जो रिचार्ज एरिया यहाँ से होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर कम्स आउट, क्योंकि इसमें जो सराउंडिंग रॉक्स होते हैं, सराउंडिंग बेड्स होते हैं, वो अनकन्फाइंड, उसमें जो रॉक्स परमेबल और पोरस रॉक्स होते हैं, दे प्रोवाइड द वाटर इजिली टू दिस वेल विच वी डग आउट। आसानी से इसको पानी मिलता है क्योंकि ये अनकन्फाइंड, इसमें कोई बाइंडिंग नहीं होती है, ना कोई एक्विक्लूड होता है जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करेगा वाटर मूवमेंट को। इसमें यहाँ दूर दूर तक एक्विफर मौजूद होता है, वाटर स्टोरेज होती है, विद द रिजल्ट इसको आसानी से पानी बाहर आता है, हमें पानी मिलता है। लेकिन इन केस ऑफ कन्फाइंड का बुनियादी खुद मतलब यही है कि ये महदूद करता है किसी चीज को, पानी के मूवमेंट को महदूद करता है। इसको ऊपर भी एक इसको एक्विक्लूड होता है, एक्विक्लूड, और नीचे से भी इस एक्विफर, अगर ये बीच में एक्विफर है, ये हमारा कन्फाइंड एक्विफर है, कन्फाइंड विद इन द टू एक्विक्लूड्स के अंदर होता है कन्फाइंड, और इसमें वाटर मूवमेंट को ये रिस्ट्रिक्ट करता है। ऊपर भी एक्विक्लूड होता है, नीचे भी। व्हाट आर द एक्विक्लूड्स? Aquicludes are the beds which restrict the movement of water. So the bed which is above the aquifer restrict the movement, below the aquifer restrict the movement of water. For which type of aquifer? For confined type of. So ये जो confined type of aquifer होता है बीच में, इसको दो लेयर, जो नीचे और ऊपर दो लेयर होते हैं, वो एक्विक्लूड्स लेयर होते हैं। एक्विक्लूड्स मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये नॉन पोरस और नॉन परमेबल बेड्स होते हैं, जो इस वाटर मूवमेंट को, इस एक्विफर को महदूद करता है, इसकी पानी को महदूद करता है विद इन। ये तब ही पॉसिबल होगा जब इसकी हाइट, यहां से जो रिचार्ज एरिया आएगा इसको, जहां से पानी इसको आएगा, अगर ये हाइट पे होगा तब जाके ये कहीं पे हमारे वेल को वाटर सप्लाई करेगा प्रेशर की बुनियाद पे। अगर इस रिचार्ज एरिया की हाइट नीचे होगी तब प्रेशर बहुत ही कम रहेगा। इसमें सिंपल सी डिफरेंस है। जो हमारा कन्फाइंड एक्विफर होता है, ये कन्फाइन होता है एक्विक्लूड से, ऊपर भी और नीचे भी लाई करते हैं इसको एक्सक्लूड, जो इसकी वाटर मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कन्फाइंड एक्विफर तभी हमें वाटर सप्लाई करता है जब इसको रिचार्ज एरिया की हाइट ऊपर होगी, सो दैट ड्यू टू एटमॉस्फेयर, ड्यू टू प्रेशर, वाटर प्रेशर, ये पानी बाहर देगा हमें वेल्स के जरिए। लेकिन जो अनकन्फाइंड एक्विफर है उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसका जो रिचार्ज एरिया या जो भी उसको सराउंडिंग बेड्स होते हैं वो एक्विक्लूड्स नहीं होते हैं, वो फ्री मूवमेंट वहां से पानी का होता है हमें अनकन्फाइंड, क्योंकि वो कन्फाइंड किसी साइड से नहीं होता है, यानी कि उसकी जो वॉल्स जो होते हैं, सराउंडिंग बेड्स होते हैं, वो कन्फाइंड नहीं होते हैं, बल्कि अनकन्फाइंड, वहां वाटर मूवमेंट अच्छी तरह से हो जाती है एक रॉक लेयर से दूसरे रॉक लेयर में, विद द रिजल्ट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें इजिली अनकन्फाइंड एक्विफर से पानी मिलता है। सो these were the two types of aquifers which have been defined or understood on the basis of their difference.